चलें जी. Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic which I'm going to start is probability. ठीक है. So technically what a probability is. So you should know that what probability is. That probability is the chance of happening, right? So we should know that probability is chance of happening slash not happening. How likely? It means that it means to check the chance of something that happened or will happen in the coming future. So first of all, we can relate that I can relate that probability possibility possibility. ठीक है? We all are aware about this thing that probability is possibility. Like for example, right now, according to my phone, it says that in Peshawar, the weather right now is the weather right now is 7 degrees centigrade. And right now, weather right now is 7 degree centigrade. But for tomorrow, which is Saturday, for tomorrow, Saturday, the probability is that it will drop to 2 degrees centigrade at night. At night, right? So this Saturday temperature, like for example, you saw this that this temperature, this is probability. This temperature, this temperature is the probability. It is the probability of Peshawar weather on the basis of today's weather. आज के वेदर के हिसाब से आज प्रिडिक्शन है और हिस्ट्री ऑफ पेशावर. ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इसको सीखें. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कैसे कहते हैं बेटा? ये किसी काम का होना, किसी काम का ना होना. कितने परसेंट चांस है कि ये होगा, कितने परसेंट चांस है कि ये नहीं होगा. एग्री? सो फॉर एग्जाम्पल, आपको ये चीज कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको गेम से स्टार्ट लेना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट लूडो. लूडो गेम. We all are aware about this game, that what Ludo game is. Agree? We have a dice in it. हमारे पास एक dice होता है, right? And a dice has 6 chords. How many scores are there on the Ludo dice? It has 6 chords, like that. And there are few small numbers like 1. It has 2. It has 3. It has 4. It has 5. This is what Ludo dice is. Agree, everybody? Yes or no? And Yes, we sir. all are aware about that what Ludo is. For example, if we are playing a Ludo, any four of us, so we know that the probability of getting a score, ठीक है, कि आपको कोई स्कोर आएगा, ठीक है, that is 6 out of 6, means total outcomes is 6 and you can get any one of them, so that is 1. So it means that I can relate with that total probability is 1. The total probability is 1. So we should remember that total probability is 1 or 100%. Agree, Rida? Yes, sir. Okay, so the range of the probability, it ranges from 0 to 1, 0 to it ranges from 0 to 1 or 0 to 100%, 0% to 100%. अगर परसेंटेज में करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, that's it.
Okay. For example, we are playing a Ludo game, and we know that in Ludo we have a dice, and a dice has six scores. How many scores are there? There are six scores on a Ludo dice. As you can see, one, two, three, four, five, six. Okay. For example, this P represents probability. Murtaza, as you can see that there are six scores. Agree? Yes, sir. So probability of picking even number would be how Three much? by three by six, sir. Okay, we can see that the total numbers are six, and out of six, three are what they are even numbers. So it would be 3/6 or 1/2. Rida, we know that 1/2 is 0.5. Agree? Yes, sir. And कल ही हमने पढ़ा है कि परसेंटेज क्या होती है, तो परसेंटेज इज मल्टीप्लाई बाय 100 और 50%. Agree? It means that 50% is the chance that we will receive an even number when we throw a dice. Noor, what will happen if we throw a dice and we get an odd number? Noor, It's 3/6. very good. It remains the same because out of six, three are evens and three are odd numbers, because one, three, and five, they are odd numbers. So that would be 1/2, which is equals to 0.5 or 50%. So we can say that even plus odd, even was 50%, odd was 50% again. They both equal to 100%. Do you agree with me? Yes or no? Yes, sir. Good job. For example, Hurera, as you just joined, so let me explain this a bit for you. Like for example, look at this thing. Like for example, look at the scores 1, 2, 3, 4, 5, 6. That these scores are what? They are the scores of a Ludo game. Agree? Agree, Hurera? Hurera? But can you hear me? Okay, you can hear me. Okay. Like for example, you can see that it's a Ludo dice, and I'm going to bring this Ludo dice here because I want to continue the question. Okay. What will happen if I throw a dice? P means probability that I get a prime number. I get a prime number. So how many prime numbers are there? First of all, we have to check that how many prime numbers are there. We can see that prime numbers, prime numbers here are Rida. How many are prime numbers? 3. Which ones? 2, 3, and 5. We can see that these three are prime numbers. Agree? So prime number, they are 3 out of 6. It means that 1 out of 2, which is 0.5 or 50%. Right, Hurera? Hurera, I want you to tell me what is the probability of picking 6? Make it quick. Make it quick. That what is the probability of picking a 6? Sir, 6/6? No. I don't get it. Sir, Listen to 1. me, na. Listen to me, Hurera. Like total probability is 6. Agree? Total outcomes are 6. Agree? And Yes. out of 6, we have only one digit, which is 6. So the 1/6 is the probability. Agree? Agree? Yes, sir. Okay. For example, if I am playing Ludo with you, and for example, what is the probability of getting two sixes together? Agree? I'll throw a dice and I'll get a 6. So I'll get 1/6. I'll throw a dice again and I'll get 6. So it would be 1/6 once again. Agree? So it would be 1 times 1 is 1 and 6 times 6 is 36. Agree, Rida? Noor, Hoor, Yes, sir. सर इसकी Mishal? समझ नहीं आई सर. ओके नो Yes, प्रॉब्लम sir. खैर है सर. पहली आप पहली दफा पढ़ रहे हैं नो प्रॉब्लम समझ आ जाएगी एक दो मैं अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी हम इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे
Yes, sir. Okay, Murtaza, beta, please pay attention. What is the probability of getting a 6? Then you get a 6 again on a second turn, and only 3 turns are allowed. And this is the maximum number if you are playing with a dice. Agree? Yes, sir. Agree? Okay. What is the probability of getting a 6? Sir, 1/6. Okay, 1 by 6. You got 1 by 6. Now you are throwing it again. Do it again. 1/6, sir. Very good. Okay, now you got 6 once again. Okay, now throw again and expect 5. The 1 by probability is yes, it remains the same 1 by 6 because 5 also has the same probability the way 6 has. Agree? Okay, sir. समझ आ गई, समझ आ गई. So 1 times 1 is 1. And 6 cube is 6. 6 are 36. 36 times 6 is 216. Yes, sir. Okay, this is the probability, and this is too less. Like, for example, if I use the scientific calculator, lucky is the person who get this score in Ludo game because it's a 216 part of 1. We can see that. Wait a minute, let me use the calculator so that you can see that 1 by 2, 1 divided by 216 is how much. So it is 1 divided by 1. Wait a minute. 1 divided by 216. And the answer is, you can see that it's too less. Agree? It's a standard form. And we know this already, that how to use a standard form. 4.6299 times 10 raised to power minus 3. And Rida, we know that negative means go left. So 4629. So 1, 2, 3. Remember that? So it is 0.004629, which is too less. If I multiply with 100, I still get 0.46% chance out of 100% that you will get the maximum number in Ludo. Agree? Agree, everybody? Yes, sir. So that's how game plays. Probability, the concept of the probability, it is always in the game. Like, for example, we know, we all are familiar with the cards game. Agree? Agree, everybody? Yes, sir. In Yes, cards sir. game, we have the total cards are 52. Agree? Okay, so every card is of number 4. Agree? Like, for example, in cards, we have A, we have King, we have Queen, we have J, then we have 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, and 1 is A. So, for example, every card is 4 in number. So, 4, 4, 4, 4. So, that is the reason we have 52 cards. Agree, everybody? Yes, sir. Agree, everybody? Okay. Uh, Rida, beta, these 4 cards, these are called faces. These are called faces. They're called what? These are called faces with some images. Like, for example, faces इसलिए बोल रहा हूं मैं यहाँ पे कि इन पे images होती हैं. Agree? और बाकी कार्ड्स पे सिर्फ नंबर्स होते हैं. समझ आ रही है सबको? किसी को समझ नहीं आई तो जरा माइक ऑन कर लो. Agree? Yes, sir. Okay. Now, for example, Hurera, Hurera, what is the Yes, sir. probability of picking A? What is the probability of picking A? A कितने हैं? How many A's are there? 1. No, look at that. आपके पास जो 52 cards होते हैं ना बेटा, तो उसमें Yes, 2 sir. black A होते हैं, 2 red A होते हैं. Remember? Yes. तो इसका मतलब है A कितने होते हैं? 4 होते हैं ना? Okay. So the probability of picking a A card, it is 4 by 4 52. out of 52. Get it? Yes. Okay, Noor, what is the probability of picking a king? 4 by 52. Yeah, it is the same. It is the same till 2. Like, for example, Barira, what is the probability of picking a card with the number 2?
So 4 by 52. Yeah, that is the reason. Agree? Like, for example, someone split the game and someone has 3 A's. Someone has 3 A's. So, what will happen now? Now, that is the case I'm going to tell you now. That this is the case of without replacement, where we pick the second card while holding the first card in our hand. Agree? Agree? Yes, sir. Okay, like for example, I have 52 cards. I'm going to pick I'm going to pick 3 A's one after the another. Please pay attention, everybody. I'm going to pick, as I know that the probability of picking the card A is like that. You can see that probability of picking A card is 4 out of 52. Ishal, you just joined. So we are discussing about the cards game, that there are total 52 cards, right, Ishal? Yes, sir. Okay. And out of 52 cards, there are 4 A's. Agree? Yes, sir. Okay. Now, please make a link that Hurera said that, sir, probability of picking a card is 4 out of 52. Agree? Because there are 4 cards out of 52. ठीक है? मैं बेटा कॉन्सेप्ट बना रहा हूं आपका सबसे पहले, तो कॉन्सेप्ट मेकिंग के अंदर आपको जो क्वेश्चन दिमाग में आता है ना, आप पूछेंगे मेरे से, ठीक है? फॉर Yes, sir. एग्जाम्पल आई हैव 52 कार्ड्स इन हैंड. मैं थोड़ा स्लो बात कर रहा हूं, तो काइंडली पे अटेंशन. अगर तेज बोलूं तो आप मुझे स्लो करवा सकते हैं माइक ऑन करके. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 52 cards in my hand. I'm going to pick a card and I assume that card is A. So I know that the probability of picking A is 4 out of 52. Right, Rida? Yes, sir. Now I'm holding that A card and it's in my pocket now. Agree? Agree? Yes, sir. Rida? Yes, sir. Okay, I'm going to pick another card, but now the total number of cards in my hand is 51. Agree? Agree? And now, out of 4, one card is already in my pocket. So there are 3 left. That this is the probability of picking second card with a face. Agree, Hurera? Agree? Yes, sir. Okay. Now I'm going to pick the second card. I'm going to place the second card in my pocket again, but I'm going to pick the third A card from what? From 50 cards now. Get it? And out of 50, there are 2 A's only left in the packet. Agree? Is this clear, everybody? Yes, sir. Yes. हाँ जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है? जी, जिसका क्वेश्चन है बेटा, टर्न ऑन द माइक. Sir, समझ जाएगी बेटा इस सर कहानी की पूरी. जी जी. ये वाला समझ नहीं आया. हाँ, दोबारा बोलिए सर, आपकी आवाज कट गई है. अच्छा, कितना समझ नहीं आया? सर ये वाला समझ. अच्छा, कितना समझ नहीं आया, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे. नो सर प्रॉब्लम, ये कोई 2 बात. डिवाइडेड बाय 50 वाला. अच्छा, जरा देखो, अब एक चीज जरा गौर करना, ठीक है? अब जरा पे अटेंशन, ठीक है? अभी फिर 1 मिनट के लिए कोई भी माइक ऑन ना करे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल बेटा, टोटल 52 कार्ड्स है. 52 कार्ड्स में से मैं ए का कार्ड निकालना चाहता हूं. मुझे पता है कि उस पैकेट के अंदर 52 कार्ड्स में आई हैव ओनली 1 A. तो मैंने एक ए निकाला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई. ठीक है हुरैरा? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस Yes, और sir. नो? ओके, थैंक्स. अब वो जो ए का कार्ड मैं निकाल चुका हूं, वो मैंने अपनी पॉकेट में रख लिया है. एग्री? नाउ आई एम गोइंग टू पिक another card from the packet. लेकिन अब मेरे पैकेट में 51 कार्ड हैं, क्योंकि एक कार्ड मैं पहले ही अपनी जेब में रख चुका हूं. एग्री? सो मुझे पता है कि अगर मैंने दूसरा ए निकालना है, तो अब मेरे पास जो 51 कार्ड्स पड़े हैं, उसमें सिर्फ 3 ही ऐसे कार्ड्स हैं जो कि ए वाले हैं. एग्री? सो दैट इज द रीजन आई रोट 3 आउट ऑफ 51. नाउ जब मैं दूसरा ए भी निकाल चुका हूं, वो भी मैंने अपनी जेब में रख लिया. टेक्निकली आउट ऑफ 50 मैं 2 कार्ड्स निकाल चुका हूं, और 2 कार्ड निकाल लिए. दैट इज द रीजन मैंने डिनोमिनेटर 50 कर दिया है. एग्री?
और अब उन 50 में सिर्फ 2 A's ही रहते हैं क्योंकि 2 A's रिमेनिंग वाले वो मेरी जेब में पड़े हैं. एग्री? दैट इज द रीजन आई रोट 2/50. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, नो प्रॉब्लम. आगे जाके अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. अभी तो हम लोग इसका थोड़ा सा ग्राउंड बनाएंगे, उसके ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है? ओके. एज आई सेड दैट टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1. ठीक है, जरा सब रिलेट करें. ठीक है जी. इट्स अ ट्री डायग्राम. ये ट्री डायग्राम में एरो लगाते हैं, इसमें कुछ इतनी बड़ी साइंस है नहीं. रेन इज एंड नॉट रेन. हुरैरा, नूर, Yes, sir. नूर. Yes, sir. But according to, for example, according to my phone, it says that, according to my phone, it says that 0.2% is the chance that it will rain tonight. 0.2 nahi, sorry, 0.2, not percent. Okay. So how much is the chance that it will not rain? 0.8. Get it, everybody? Yes, sir. Yes. हुरैरा समझ आइए बेटा? जी सर. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक और एग्जांपल इसके साथ रिलेट करेंगे. ठीक है? टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1. ओके. The probability that I'm going to wear red shirt tomorrow and black shirt tomorrow, the probability that I will wear the red shirt tomorrow is 9 out of 15. What is the probability of picking black shirt tomorrow? 6/15. Get it, Hurera, Rida, Barira, Maro. बेटा समझ आ गई ईशाल? Yes, sir. ओके, ये कैसे होता है जरा ये देख लें. एज आई से दैट टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1. तो 1 में से मैंने माइनस किया 9 आउट ऑफ 15 एंड वी नो दिस दैट 1 माइनस 9 आउट ऑफ 15, 9 आउट ऑफ 15. पास पेपर से पहले ये कॉन्सेप्ट लेना बहुत जरूरी है. अच्छा, इट इज 2/5. 2/5 क्यों आए? कटिंग हो गई. अच्छा, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 2/5. एग्री और नॉट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके. ओके. Rida, can you hear me loud and clear? Yes, sir. Rita, this is a bag, okay? It's a bag. I'm going to draw a bag. In this bag, I'm going to place few balls for you. And the first 3 balls are blue ones. You can see that. The 2 balls are yellow ones. Agree? The 4 balls are red ones. 1, 2, 3, 4. Okay, now I have total in 5, 9. Okay, the 6 balls are 3, 4, 5, 6. The 6 balls are green. So, Hurera, total outcomes are how many? Total outcomes are how many? How many balls are there? Hurry up, count. Sir, 15. There are 15 outcomes. There are 15 balls in this bag. Right, Rida? Yes, sir. Noor, what is the probability? What is the probability of picking the blue ball 3 by from the bag? 15. Yeah, it's 3/15 or 1/5. Well done. Good job. Marok, what is the probability of picking a yellow ball from the bag? Make it quick. Make it quick. Marok? Sir, 2/15. Okay. Yeah, thank you so much. It's 2/15. बहुत दिन बाद तुम्हारी आवाज सुनी है, बहुत अच्छा लगा दिल पे. रेगुलर क्लास लिया करो. Probability of picking a red ball. Anyone? कोई भी बता सकता है. Sir, 4/15. 4/15. It would be 4/15. Thanks, Khan. And what is the probability of picking a green? Rida? Green? Six out of 15. Okay, Rida, the same question is from you. No, Noor,
The same question is from you. Which color is the most likely? Which color is the most likely, Noor? Sir, green. Yeah, green. And if I ask you the reason why, the reason is because reason. 6 by What 50. is the reason? 6 by 50 Yes, is the high. because 6 out of 15 is the highest than others. There are 6 balls out of 15 which is green. Okay. Let me pick the bag which जो मैंने बैग ड्रॉ किया इसको पिक करके थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं. Duplicate. Okay. Done. Okay. उष्णा आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी सर, ये बैठी हुई है। ओके, मैंने इसका नाम ठीक लिया कि गलत लिया यार? सॉरी. सही है सर, सही है, सही है। Okay. The question. Okay, thank you. Okay, what is the probability? Ushna, मेरी बात सुने बेटा. What is the probability of, for example, let me write a question in English. Wait a minute, okay? For example, question is, Ushna is going to pick 2 balls randomly. What is, एक मिनट, यहाँ पे एक चीज मैंने मिस कर दी. Randomly without replacement. Without replacement. What is the probability? What is the probability of picking 2 yellow balls? बेटा किसी का माइक ऑन है, जरा बंद कर दें. ओके जी. उष्णा बेटा, कैन यू हियर मी? यस सर। ओके बेटा, look at the question, everybody. Ushna is going to pick 2 balls randomly, like means that she's not watching the bag, she's not watching the colors. Agree? She's not watching the colors, but she's going to pick 2 balls randomly from the bag without replacement. Without replacement, it means that she will pick one ball, she'll note the color, she'll keep it in the pocket, and then she's going to pick another one. Agree? Ushna, beta, what is the probability of picking 2 सर yellow balls? It means that the first ball is yellow times second ball is also yellow. Okay. सर 1/15 मल्टीप्लाई बाय 1/14। बेटा आप उष्णा है? यस सर। ओके, सो पहले येलो बॉल देखें जरा. येलो बॉल कितने हैं? सर 2। It's 2. Yellow balls are 2 out of 15, right? यस सर। Now that one yellow ball is in your pocket. Okay, done? यस सर। Okay, now you're going to pick another yellow ball. Remember that there are 14 balls now in the bag. Agree? यस सर। And out of those 14 balls, how many balls are yellow? 2। No, now 1 1. Now it's 1. Rida? जी So सर। 2 times 1 is 2, and 15 times 14 क्या आता है बेटा? जरा कैलकुलेटर पे करो. 15 times. सर अच्छा, मेरे 210। पास कैलकुलेटर. 210। Okay, it's 210. So simplify हो सकता है 1 divided by 105. Agree? जी So this सर। is the final answer. Okay, Rida, the question is from you. What is the probability? What is the probability of picking green then yellow? Yes. Rida, the question is from you. बेटा ग्रीन बॉल पिक करो जरा बैग से. 6 out of 15. ओके, अब जरा रिलैक्स हो जाना, ठीक है? 1 मिनट. अब वो जो ग्रीन बॉल है ना, वो आपकी पॉकेट में चला गया. एग्री? जी सर। बैग में कितने बॉल रह गए हैं? 14. 14 में से येलो कितने हैं? 2.
जबरदस्त, समझ आ गई? जी सर। चलो गुड हो गया भाई। 6 2 are 12। अब ये 12 डिवाइड बाय 2 10 वही आएगा। सो 12 डिवाइड बाय 2 10, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो इट वुड बी 2 आउट ऑफ 35। हुरैरा, आवाज आ रही है मेरी बेटा? सर ये सर रिपीट कर दें प्लीज। देखो मैंने इससे क्वेश्चन पूछा है रिदा से को कि क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ग्रीन बॉल एंड देन येलो बॉल, ठीक है? सो हुआ क्या कि जब उसने ग्रीन पिक किया तो इट वाज 6 आउट ऑफ 15। अब वो ग्रीन बॉल अपनी जेब में रख चुकी है, एग्री? जी सर। बैग में 14 बॉल है, अब उसने येलो पिक करना है, तो येलो बैग में है ही 2, तो 2 आउट ऑफ 14 इज द प्रोबेबिलिटी, एग्री? ठीक है सर, समझ आ गई, ठीक है। ओके मिशाल, कैन यू हियर मी? यस सर। Okay, मेरा बेटा. So get ready for the question. I want you to pick two balls randomly from the bag and दोनों के दोनों बॉल रेड होने चाहिए. तो पहला बॉल पिक करें. तो फर्स्ट 4 बॉल by पिक करें. 15। जबरदस्त. 4 आउट ऑफ 15. एक बॉल आपने रेड पिक कर लिया. अब दूसरा रेड निकालो बैग में से. 3 out of 14। जबरदस्त. Very good. Proud of you. It would be 4 times 3 is what? 12. 12 divided by 2 10 and 2 out of 35. इसका मतलब है मिशाल, आपको एक बात नजर आ रही है कि रेड रेड एंड ग्रीन येलो, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, एग्री? यस सर। तो इसका मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर इन कलर्स के ऊपर गैम्बलिंग हो रही हो तो इनके ऊपर इतना पैसा लोग नहीं लगाएंगे, समझ आ रही है? हाँ, क्योंकि उनकी प्रोबेबिलिटी सेम है इसलिए। हाँ, कुछ भी हो सकता है, वो दूसरा कलर भी आ सकता है, ठीक है? ओके। प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादातर जो है वो गैम्बलिंग के अंदर ही यूज किया जाता है, ठीक है? कॉपी, डुप्लीकेट, any another one? Wait a minute, okay? So, okay. Okay, Noor, can you hear me? आप Yes, नूर से sir. मैंने ओके नूर से मैंने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं. हूर, आपकी बारी है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग येलो बॉल, then blue ball and then red ball? Okay, you are going to pick 3 balls now. Okay, do it without replacement. Pick yellow. Hoor, come on yaar. Sir, 2 by 15. Good. Okay, remember that there are 14 balls now in the bag. Now pick blue. 14, 3, 3 out of 14. Good job. 3, Remember now there are and 13 then balls in the bag. 4 by 13. Very good. जबरदस्त. समझ 4 आ by गई 13. सबको बेटा? यस सर। जबरदस्त. कि बेटा कि जिसको समझ नहीं आई जरा अपना माइक ओपन करे. समझ आ गई बेटा सबको? जी सर। गुड जॉब. चलें जी, जरा इधर इधर 1 मिनट के लिए मैं लेक्चर को थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ. 1 मिनट सफर करें, मैं जरा वर्कशीट ओपन करना चाह रहा हूँ, तो जस्ट गिव मी अ मिनट. तो स्टॉप शेयरिंग. ओके, इतनी देर आपका कोई भी जनरल कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. माइक ऑन करें, बात कर सकते हैं हम लोग जितनी देर में वर्कशीट ओपन कर रहा हूँ. हुरैरा एंड रिदा, बेटा आप लोगों ने घर में काम किया, एवरीडे मैथ्स पढ़ी? बरीरा, नहीं सर। बेटा पढ़नी है ना? नहीं नहीं सुनना चाहता हूँ मैं, ठीक है? ओके सर। बेटा पढ़नी है, आज आपने पूरी कसर निकाल देनी है, अच्छा कल की भी, एग्री? यस सर। प्रॉमिस मी? ओके सर। आई सेड से प्रॉमिस. प्रॉमिस। ओके थैंक्स. हुरैरा, सेम फॉर यू. हुरैरा क्लास में है कि लीव कर गई है? आई थिंक शी इज नॉट हियर। ओके, चलो जी, जरा वन बाय वन बेसिक एक एक बेसिक बेसिक जरा प्रोबेबिलिटी के करते हैं, ताकि हमें जो है डिफरेंट चीजें जो है ना वो हमें समझ आ जाए, ठीक है? 1 मिनट. अच्छा, सैंपल स्पेस की बजाय पहले जरा बेसिक कर लेते हैं. ओके दैट्स गुड. तो अब मैं कर सकता हूँ स्क्रीन को शेयर. स्क्रीन. ओके,
मेरा बेटा क्वेश्चन नजर आ रहे हैं आपको? जी सर। ओके, द डायग्राम शोज अ फेयर स्पिनर, ये एक फेयर स्पिनर है, ठीक है। व्हिच कलर इज द एरो मोस्ट लाइकली टू लैंड ऑन, किस कलर के ऊपर ज्यादा ये एरो जो है वो जा सकता है? येलो। येलो। वेरी गुड, इट्स येलो। बेटा सब अपना माइक ऑन करके बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बात करें कि डिस्टरबेंस ना लगे, ताकि रिकॉर्डिंग अच्छी बने हमारी। Okay, mark the scale with an arrow to show the probability of landing on green. So 0.15 सर। बेटा ग्रीन है ही नहीं इसमें तो। ओ सॉरी सर, मैं ब्लू ब्लू वो कर रहा था सर। Okay, so it's zero. ये जीरो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो वन साइडेड एरो बना देना, ठीक है। एग्री? जी सर। Okay. Now, which word from the box best describe the likelihood of each of these events? A newborn baby is a girl. Impossible, unlikely, even chances, likely, or certain. Even. Very good. It can be a boy, it can be a girl. Okay. You thrown an ordinary dice and get a 2. सर अनलाइकली। Very good. Okay. नहीं। Okay. चलो ये डाइस वाले को छोड़ो, ये इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते। जो क्वेश्चंस आते हैं ये देखें जरा। Amir makes a fair spinner with 6 sectors, 2, 3, 3, 4, 5. नजर आ रहा है, तीन दफा 3 लिखा हुआ है। Use a word from the box which describes the probability of each of the following events. The spinner will land on 6. इम्पॉसिबल। Very good. It's impossible. बेटा आप सब पार्टिसिपेट करें। Okay. The spinner will land on 3. सर इवन। Very good. सर Even chance है। लाइकली नहीं होगा। Yes. It's not even. Good job मारो। ये likely है, ज्यादा चांसेस जो है ना वो इसके हैं, इवन नहीं है बेटा। समझ आई है? जी सर समझ आ गई, सॉरी गलती हो गई। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मैंने खुद लिख लिया था जल्दी में। सर क्यों Thank- इवन नहीं है? बेटा इवन इसलिए नहीं है क्योंकि एक साइड पे 3 है तो दूसरी साइड पे कोई दूसरा नंबर तो नहीं है ना। 2, 5, 4 तीन डिफरेंट नंबर्स हैं। एग्री? इवन होता है 50-50। ओके। ओके ओके। रिदा, द फॉलोइंग कार्ड्स आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। कुछ ये 1, 2, 3, 5, 6 6 कार्ड है, इनको बैग में डाल दिया है, ठीक है। टोटल कार्ड्स कितने हैं? तो टोटल का आउटकम्स कितने हो गए? 6। टोटल आउटकम्स कितने हैं रिदा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज 3। 3 कितने हैं? मेक इट क्विक। सर 1/6। It 1/6. Agree? And what is the probability of picking an odd number? सर 3/6, 1/2, 50%। Very good. 3/6 और 1/2 पॉइंट में लिखना पड़े तो हाफ, और परसेंटेज में लिखना पड़े तो it is 50%. Is this clear, everybody? Okay. Noor, a fair spinner has 8 equal sections and the sections are labeled A, B, C, D and E as shown below. The arrow is spun, and which is the most likely letter that the arrow will land on? सर Most A. A. Okay, and the reason is because there are 3 A's 3 out of 8. Agree? Agree, everybody? यस सर। चले बेटा, मैं Yes, लेक्चर आप sir. लोगों को भिजवा रहा हूँ along with a homework worksheet। उस वर्कशीट को ओपन करके बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होंगे, आप लोग वो अटेम्प्ट करें। कल कैम्ब्रिज स्टाइल क्वेश्चन जो हैं वो कल की क्लास में पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि कल की क्लास 2 घंटे की है, ठीक है। और वो इंशाल्लाह ताला होपफुली मैं दोपहर 2 बजे से 4 बजे के दरमियान में लूंगा। 2 to 4 जो है वो इंशाल्लाह मैं क्लास लूंगा आप लोगों के साथ। 2 घंटे की क्लास है, तो कल के 2 घंटे में हम लोग पास्ट पेपर क्वेश्चंस करेंगे। मेरे फेस टू फेस वाले स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि कल की क्लास जब आप लेने बैठे तो आपके पास पेपर 1 और पेपर 2 की बुकलेट बिल्कुल सामने पड़ी हो। इज दिस क्लियर? यस सर।
और Yes, मेरे sir. ऑनलाइन स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आपने अपने ईयरली पेपर्स जो हैं बिल्कुल अपने सामने रखने हैं कि जहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करें, तो उसी टाइम आप वो क्वेश्चन अपना कॉपी में ओपन कर लो। ओके? Okay, sir. थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।